एक मिनट से बता दूं। सर 7 का। Question number 7. Okay. So she has consumed this thing. So discharging हो रही है. So 420 tons जब discharge होगा तो उसका लीवर जो है that will be 35 minus 2.4, so that is 32.6. Is that okay? Yes sir. And since you're discharging from aft, so it will give you a head trimming moment. Yes sir. So ऐसे ही करते करते you will find out the final trimming moment. वो कितना आता है? सर ट्रिमिंग मोमेंट आया 13632। 13632. Is that okay with everybody? Sir, 13884. 13884 सर। Okay, 13884. So आपका trimming moment में गड़बड़ है भाई. So that means हाँ you सर have शायद to. उसकी वजह से हो गया। So you check your this thing multiplications. 420 into 32.4, then 220 into 57.6. सर 32.6 रहेगा ना। 32.6, correct. Then 200 into 62.4. These are your या तो trimming. यही है सर, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। So जरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए. एंड डिस्चार्जिंग हो रही है तीनों में, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट ट्रिमिंग मोमेंट होगी. अगर पीछे से डिस्चार्जिंग हो रही है तो हेड होगी, और अगर आगे से डिस्चार्ज हो रहा है तो ट्रिम स्टर्न देगा, और फिर टोटल करके दोनों को कंपेयर करके माइनस करना है. सो दैट टेबुलेटेड वाला जो पार्ट है वो इतना कोई ज़्यादा उसमें मोर ऑफ मैथमेटिकल, लेस ऑफ. सो यू कैन जस्ट चेक हाँ सर, योर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। बाकी अदरवाइज देयर इज नथिंग, नो ट्रिक अटैच्ड इन दिस क्वेश्चन. हाँ सर, वही कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। Any other doubt up to question number 9? Anybody? Nahi? Chalo. Okay, so let's move ahead to the next type of questions. That is, now in questions to find HF. कई questions में HF दिया नहीं होगा, तो जब HF नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे? That is this thing. So I am coming on to question number 11. HF is not given. So let us see. Question number 11. LBP length is given to us as 130 meters. MCTC is 175. Forward draft 7.2. Aft draft 7.8. $1,600 tons of cargo was loaded. So W1 is plus 1,600 tons. W2 is plus 1,400 tons in two locations. And in number 2 lower hold,
HG is 30 forward, and number 5 lower hold, whose HG is 55 aft. The drafts were then found to be forward. So final drafts were found to be 7.8 meters forward and 10.4 aft. We have to find HF. So ऐसे क्वेश्चन में जब HF नहीं दिया हुआ है तो you make what is the time scale. This is a time scale. So supposing this is aft, this is forward, this is midship. Okay. Now this midship is your L by 2, which is 65 meter. So you do not know center of flotation. So let HF be x meters forward. ये मैं assume करके चल रहा हूँ. Is that okay? Let HF. हर बार फॉरवर्ड ही लेना है. नहीं, aft भी ले सकते हो. You want me to take aft? I can take aft also. Doesn't matter. I can take forward. So, I but can take उस aft. हिसाब से तो प्लस माइनस करेंगे ना, जैसे फॉरवर्ड या हाफ लेंगे. See, basically क्या है कि मैं खाली x ले रहा हूँ, ठीक है, और x लेके मैं x को फाइंड आउट करूंगा. अगर तो मेरा x सपोजिंग आया +1 मीटर, तो इसका मतलब है, प्लस का मतलब है जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम करी थी वो करेक्ट थी और वैल्यू HF की 1 मीटर है. सपोजिंग मेरा x आया -1, इसका मतलब जो दिशा मैंने ली थी, एज्यूम करी थी, वो उल्टी हुई. Therefore HF is 1 मीटर आफ्ट. समझ में आया? यस सर. So I can take anything. So what do you want? You want me to take forward or aft? क्या लूँ मैं? फॉरवर्ड चाहिए. Okay. So it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता. So पहला वाला पॉइंट जो है 1600 टन, वो 30 फॉरवर्ड से है. So ये पहला वाला है G1. यहाँ पे लोडिंग हो रही है प्लस 1600 टन की, और ये 30 फॉरवर्ड है, ये 30 मीटर. और दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे हो रही है लोडिंग G2 पॉइंट पे, ये 55 आफ्ट. ओके. और यहाँ पे मैं 1400 टन लोड हो रहा है, प्लस 1400. सो लेट अस स्टार्ट. इनिशियल ट्रिम. हाउ मच इज माय इनिशियल ट्रिम? 0.6 meters बाय स्टर्न. by stern. Final trim. कितना आता है? 6 बाय स्टर्न. 2.6 meters stern. Therefore, TC कितना बना? 2 meters by stern. हाँ जी, सर 2 मीटर बाय स्टर्न. 2 meter by stern. Convert this to centimeter starting में. So TC is 200 centimeters stern.
but I know TC is equal to trimming moment upon MCTC. Therefore, 200 is equal to trimming moment upon 175. Therefore, trimming moment is equal to how much? 35,000 By the by stern. West. Is this okay for everybody? Okay. So trimming moment is 35,000 by stern. So therefore, अब मेरे को ये मिल गया. अब मैं ट्रिमिंग मोमेंट का टेबल बनाता हूं. So weights loaded, लीवर. लीवर की डेफिनेशन क्या है? GF. ट्रिमिंग मोमेंट हेड स्टर्न. सो सबसे पहले नंबर 2 लोअर होल्ड. दिस इज रिमार्क्स. फर्स्ट कॉलम. वेट्स लोडेड 1600. लीवर क्या होगा इस 1600 का? So 30 minus X. करेक्ट. सो मैं आगे लोडिंग कर रहा हूं, तो ये मुझे देगा हेड ट्रिमिंग मोमेंट 1600 into 30 minus x. Stern will be dash. दूसरा मैं लोडिंग कर रहा हूं नंबर 5 लोअर होल्ड में. 1400 मैंने लोडिंग की. दूसरे 1400 के लिए लीवर क्या होगा मेरा? 55 plus X. करेक्ट. और क्योंकि मैं पीछे लोडिंग कर रहा हूं तो ये मुझे देगा स्टर्न ट्रिमिंग मोमेंट 1400 into 55 plus x. Crucial stage of the question. Final trimming moment. Because my trimming moment over here is by stern, therefore it will be stern minus head. ये समझ में आया? Because मेरे को फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट स्टर्न चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रिमिंग मोमेंट 35,000 बाय स्टर्न है. Therefore स्टर्न माइनस हेड होगा, क्योंकि मेरे को स्टर्न चाहिए. अगर मेरे को हेड चाहिए होता इट वुड हैव बीन हेड माइनस स्टर्न. ये समझ में आ गया? Is this okay? ये लाइन क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, क्लियर. इसको इक्वेट कर दो, इसको 35,000 के साथ इक्वेट कर दो. सॉल्व फॉर एक्स. Sir, 2 meters. प्लस 2. Yes, sir. Positive प्लस 2 मीटर्स. इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी थी वो सही थी. Therefore HF
is equal to 2 meters forward. ये आंसर है. अगर ये -2 होता, then I would have written therefore HF is 2 meters aft, because minus sign indicates direction only, that is opposite to what I have assumed. So you will write, since the answer is minus, therefore the direction is opposite. ये समझ में आ गया? Is this okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's go to question number 13. Question number 13. All right. A ship is 160 meters long. MCTC is 200. TPC is 30. HF is 3 meters aft. Draft forward 6.8. Draft aft 7.8. From where may W tons be discharged? So, discharging is W tons. Location, from where it must be discharged? So, HG. It must be discharged such that the draft aft remains constant. So, discharging हो रही है. कहाँ से हो रही है? So, कार्गो का भी नहीं पता. So, 2 अननोन हो गए. W भी अननोन है और लोकेशन भी अननोन है. कहाँ से डिस्चार्जिंग हो रही है वो भी नहीं पता. बट हमें ऑफ ड्राफ्ट कांस्टेंट रखना है. ऑफ ड्राफ्ट कांस्टेंट रखने का मतलब ये है, सबसे पहले तो डिस्चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पे माइनस राइज होगा. माइनस राइज होगा. फिर TF और TA आएगा जिसका साइन मुझे अभी नहीं पता. और फिर मेरा ऑफ ड्राफ्ट वापस 7.8 पे आ जाना चाहिए. अगर मैं इसको देखूं, अगर 7.8 माइनस राइज, तो 7.8 से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, तभी मैं 7.8 पे वापस आऊंगा. Yes, Agree? sir. इसका मतलब है मेरा TA का साइन प्लस होगा. Yes, sir. और अगर TA का साइन प्लस होगा तो TF का साइन माइनस होगा. Yes, sir. ये सबको समझ आ गया कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए. सर एक बार रिपीट कर दो. Okay. I am discharging something. Since I am discharging, so there will be a rise. अगर लोडिंग कर रहा होता तो प्लस सिंकेज लिखता. अभी डिस्चार्जिंग है तो माइनस राइज. तो मेरा ड्राफ्ट 7.8 माइनस समथिंग हो जाएगा.
और मुझे वापस 7.8 पे आना है, तो इस दैट इज ओनली पॉसिबल जब मैं TA को प्लस करूंगा, तभी 7.8 पे वापस आऊंगा ना। Yes, sir. तो इसका मतलब TA का साइन प्लस है, अगर TA का साइन प्लस है तो TF का साइन माइनस है। इज दैट ओके? Yes. सो अब इससे मैं इक्वेशन बनाता हूँ यहाँ पे 7.8 माइनस राइज प्लस TA is equal to 7.8. 7.8 cancels. Rise is equal to TA. Is this okay? Yes, sir. Yes. Okay. Rise is nothing but W upon TPC. Yes. TA is nothing but TC into LCF upon LBP. Is that okay? Yes, sir. TC is trimming moment upon MCTC into LCF upon LBP. Trimming moment is W into D. D is nothing but GF upon MCTC into LCF upon LBP. Is this okay? Yes, sir. Okay. W and W cancels. What do I get? 1 upon 30 is equal to D, which is nothing but GF into LCF. How much is LCF? 80 minus 3. 77. Upon MCTC 200, LBP 160. So find out GF. $13.8526. 13 point कितना? 852. 13.85. 13.852 meters. This is my GF. Okay. अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मुझे HG चाहिए। सो मुझे एक टाइम स्केल वही फिर से बनाना पड़ेगा, लाइन स्केल। ये फॉरवर्ड है, ये आफ्ट है, ये H है, F इज 3 मीटर्स आफ्ट, ये F है 3 मीटर्स आफ्ट। मेरा GF 13.8 मीटर है। अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि मेरा G 13.8 मीटर इधर है या 13.8 मीटर इधर है, ये मुझे सोचना है। सर आप में रहेंगे। हाँ, राइट कर रहा, उसके बाद लोड करते हैं। हाँ जी, अब ये मुझे सोचना है। सर आप में रहेगा सर TA प्लस में, इसलिए
सो बिकॉज मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूं, राइट, बिकॉज मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूं, सोचो, और मेरे फॉरवर्ड में को, रहेगा सर। और मुझे ये टीएफ को, मेरे को बाव को उठाना है, मेरा बाव उठना चाहिए, क्योंकि मेरा टीएफ का साइन माइनस है, तो इसका मतलब है मैं डिस्चार्जिंग आगे से करूंगा। फॉरवर्ड। समझ में आया? Yes, sir. तो बिकॉज मुझे बाव को उठाना है और स्टर्न को डालना है नीचे ऐसे, तो इसका मतलब है मैं 13 मीटर आगे, ये रहा मेरा जी, यहां से मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूं W टन्स की, और ये मेरा डिस्टेंस जो है 13.8 मीटर है। ये समझ में आया? जब मैं ऐसे करूंगा तभी मेरा टीएफ का साइन माइनस आएगा और टीए का साइन प्लस होगा। अगर मैं ऐसा करता जैसे आप बोल रहे थे पीछे से, तो मेरा तो बाव नीचे जाएगा, तो टीएफ का साइन प्लस होना चाहिए था। गॉट इट? Therefore, Hg is equal to 10.852 meters forward. This is my answer. ये समझ में आया क्या किया मैंने? इसमें दो प्रिंसिपल्स अटैच हो रहे हैं, एक ये वाला प्रिंसिपल अटैच हो रहा है और एक ये प्लस और माइनस का साइन का खेल हो रहा है। So this question is now revolving around two principles in one question. ठीक है? Is this okay? Yes, sir. Okay. Is this question fine by everybody? Next, we come on to question number 15. अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं 15 to 20, इन सब की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा है। 15 to 20 questions are the toughest of this exercise. And each and every question has some trick or principle attached to it. So you'll have to be very careful when we do these questions and be very attentive. Question number 15. Okay. LBP 124 meters. MCTC 180. TPC 27. HF 2.5 aft. Forward draft 5.8 meters. Aft draft 6.9 meters. How many tons of salt water must be run into the forepeak tank? W is how many tons? Run in का क्या मतलब होता है? What do you mean by running? Run in. सर लोडिंग
The loading. Correct. transfer. That means basically you are ballasting in this case. So loading or ballasting. So you are ballasting for peak tank. So loading for peak tank, whose HG is 58 forward. In order to reduce the aft draft to 6.7 meters, state the final draft forward also. So final aft draft सब कुछ करने के बाद हमारे को चाहिए 6.7 और फॉरवर्ड ड्राफ्ट निकालना है. सो अगेन जो मेथड अभी यूज किया था मैंने वही यूज करोगे. एंड टेल मी द साइन ऑफ TF एंड TA. TF will be positive. TA minus. हाँ जी. The TA will be positive, TA will be negative as we are loading in for big time. TF will be TF will be positive. Positive. and TA will be. Negative. So basically plus sinkage because I am loading. So plus sinkage. So my aft draft will go more than 6.9. I need to reduce it to 6.7. So that can only happen if my TA is negative. And TA is negative, TF will be positive. Is this okay with everybody? Is this okay? Yes, sir. Okay. So यहाँ से मुझे एक equation मिल जाती है. So I lift off this equation. 6.9 plus sinkage minus TA is equal to 6.7 meters. Is this okay? Yes, sir. ओके. मीटर्स को एक साइड पे ले लो, सेंटीमीटर्स को एक साइड पे ले लो. सो इनको सेंटीमीटर वाले ये दो हैं, इनको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया. तो व्हाट डू वी गेट? TA माइनस सिंकेज इज इक्वल टू 0.2 meters. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो. TA माइनस सिंकेज इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स. अब इनकी वैल्यूज लिखनी शुरू कर दो. TA इज इक्वल टू ट्रिमिंग मोमेंट अपॉन MCTC. T that is TC into LCF upon LBP. Is that okay? मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन. TA is equal to TC into LCF upon LBP. TC is nothing but trimming moment upon MCTC. Minus sinkage W upon TPC is equal to 20. Trimming moment is W into GF. W into D. D is nothing but GF over MCTC into LCF upon LBP minus W upon TPC is equal to 20. Now you start putting the values. W ढूंढना है हमने. GF की वैल्यू क्या है?
58 forward, Sir, 60.5. and this is 2.5 aft, so 60.5. Is this okay with everybody? Okay, sir. Up upon 180. अब LCF पे आ जाओ. LCF will be how much? 62 minus 2.5. 0.5. 59.5 अपॉन LBP यानी कि 124 माइनस स्मॉल w अपॉन 27 is equal to 20. So अब इसको सॉल्व कर दो. समथिंग w माइनस समथिंग w is equal to 20. Something w will be equal to 20. W will be equal to something. Sir, 160.98. 160.98 tons. Correct? Yes, sir. हाँ जी, any doubt? Any doubt? Okay. So these are the type of questions now which will start coming in. So I'll be going slow because now we can afford to go aram se. So henceforth I'll be going very slow now so that you can cope up with whatever is happening and you can revise whatever we are doing in class. So please try to revise everything. Okay. You can take down the homework, please. Please do solved example 5A
and 6A, 5A and 6A, solved example. And question number 10, 12 and 14. Question number 10, 12 and 14. Please do these questions at home, and then we'll tackle the difficulties that you have. But I don't think, in case you have any doubts, just refer to whatever we have done in the class. You will find some answer somewhere in that. Either in the principles or something, you will find some answer of that doubt. So try and do that. In case nahi hota, then we'll solve it in class. Okay, is that okay? Okay, is that fine? Yes, sir. So from next week onwards, I will be starting ROR also. मैं ROR भी शुरू कर दूंगा जो हमने हमने कहाँ तक किया था ROR स्टार्ट किया था हमने कुछ शुरू में Do you remember कहाँ पे सर रूल 18 तक हो गया था सर रूल 18 तक हो गया था ओके so we'll revise rule 18 once again and then we'll continue after that rule 10 नहीं हुआ था ना अभी sorry 9 and 10 No, sir. Oh, sir. सर 15, 16, 17, 18 चार रूल हैं बस 15, 16, 17, 18 ओके ठीक है 15, 16, 17, 18 हो गया ठीक है so next week से we'll start off with that also we'll start off with ROR as well ठीक है ओके बाकी चार्ट वर्क इज गोइंग ऑन फाइन प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग एंड यस सर प्रैक्टिस सर कर रहे हैं बट सर एक्चुअली हम लोगों का बेसिक सर इतना स्ट्रांग नहीं है सर चार्ट वर्क में मतलब हार्डली एनी तो अब उसका क्या क्या इलाज है अब उसका क्या इलाज है क्यों नहीं है आपके बेसिक्स स्ट्रांग सर कभी सर प्रीसी के बाद सर चार्ट वर्क सर नहीं हो ही नहीं पाया सर एंड वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट so you'll have to do you have Captain Puri's book with you यस सर so please do Yes, that sir. from next week I'll be increasing your chart work classes the number of classes will increase from next week chart work ki so you will have to address that paper because there's no way that you can be negligent on that chart work so I will be increasing your number of classes there in chart work next week say and I will be reducing navigation ki thodi si because navigation is now going at a pace so navigation ko thoda sa slow kar dunga main next week se this week moon is going on correct सर लॉन्ग background ऑलमोस्ट is खत्म हो going. गया आज इंटरसेप्ट स्टार्ट होगा आज इंटरसेप्ट स्टार्ट होगा ओके ठीक है ऑलराइट so I might but chart work is I want you to all practice that is very important for you all because उस पे 70% का पेपर है so I don't want that to be and days work is also going on days work हो चुका है कि नहीं हुआ अभी यस सर days work समझ आ रहा है days work Yes, sir. okay because उसका एक Yes, sir. क्वेश्चन उसका एक पूरा क्वेश्चन आता है डेज वर्क का सो एंड ग्रेट सर्कल अभी नहीं शुरू हुआ ना सर वो ग्रेट सर्कल से पहले हो चुका है सर ग्रेट सर्कल पहले हो चुका है तो बाबा सर ने एक दो फॉर्मुलेस करवाए तो एक दो क्वेश्चन करवाए थे बस नहीं अभी कैप्टन आरकेटी ने करा है कि ग्रेट सर्कल के नहीं
No, 9 sir, सर not अभी yet. चल शुरू होना सर। अभी शुरू होना है इसका मतलब अभी, ठीक है? नहीं सर। ठीक है, सो इसके बाद एक बार डेज वर्क हो जाएगा, उसके बाद में वो ग्रेड सर्कल पे आएंगे, ठीक है? सो just keep practicing along with as they're going in the class. So that's very important because gradually now, धीरे धीरे, I will be increasing those classes, right? So you'll have to, keep pace with those ones. Now gradually I will start reducing my classes because I am now going at a decent pace. So I've gone ahead of my schedule. So मैं gradually अपने धीरे धीरे कम करता जाऊंगा and दूसरे subjects की अब बढ़ाता जाऊंगा. Slowly I'll be throttling my classes. That's how I always do. So you'll have to adjust to that change of discharging and loading pattern, basically. You'll have to adjust to that. So bear in mind that part so that when you are revising, if you're keeping pace with the class, then it's okay. Then there is no problem for you. Important thing is to do that and simultaneously keep having a look at the. Are you having a look at the final papers also, the MMD papers from the app? Yes, sir. Yes sir. And you're trying to, like the things that we are taught, so we are doing with the question paper as well. Yeah, that is important. So जो होता जा रहा है उसके वहाँ पे questions attempt करते जाओ because finally you have to address that paper. There is that paper which will come and you should be able to solve it. So if we are doing trim right now, you should be able to do the trim in the stability paper. अगर वहाँ पे कर सकते हो तो ठीक है. अगर नहीं कर सकते वहाँ पे तो then there is a mismatch between what is happening in the class and what is the question paper coming there. That is how it is. So every question, whether a theory question also, you must write down. Normally what all the boys start doing is कि numerical कर लेते हैं. Theory छोड़ दो यार, वो तो बाद में तो रटना ही है. That is the normal logic. But I believe the other way around. I say theory, please write down the answer. Write it down in points or answer properly so that you get to the hang of it, how to write it. Once you get the hang of writing it, then you'll remember it. Once वहाँ पे एग्जाम में आएगा, उसमें कोई ना कोई पॉइंट दिमाग में आ जाता है. यार ये भी पॉइंट मैंने लिखा था. So let it be a question on ISM or ISPS or any convention or the law. Get the point? Then later on I'll tell you how to remember law also. Law की conventions जो इतनी सारी हैं, ये how to उनको कैसे याद करना है, वो भी मैं एक तरीका एक बताऊंगा. There is a आसान तरीका for that also, how to remember it. So any convention, कुछ भी हो, so you should be able to just एकदम fingertips पे आ जाएगा if you get into the methodology of it. So I'll let you know that also. But please keep pace with that because right now, today is, so now we have the month of July basically now. That's what is the time frame with us. So keeping that in mind. And you had signals, you have had ample practice, so I'm not giving you any more signals now. You've had ample practice on that. So basically you're all, by the end of the month, you should be ready for the exams. That is how it is. ठीक है? All right. Chalo. See you then. Bye. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir.